CBSE Mathematics Class 11th Chapter 15 Exercise 15.3 Question number 4. The following is the record of goals scored by Team A in a football session. This is the number of goals scored, number of matches. Matches played में 1 मैच 0 स्कोर मिला, 9 मैचेस में 1 गोल, 7 मैचेस में 2 गोल, 5 मैचेस में 3 में 4. So in this way the total matches played is equal to 25. For the team B, the number of goals scored per matches was 2. Means the mean is given with the standard deviation of 1.25 goals. Find which team may be considered more consistent. अब हमारे को देखना है कि टीम ए और टीम बी. देखिए टीम बी में मीन नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड पर मैच इज 2. Standard deviation of team B is 1.25. So coefficient of variance, the variability for team B is 1.25 into 100 divided by 2. It is 62.5. But for team A, we have to work out all these things. Now issue the X, the goal 0, 1, 2, 3, 4. These are the goal, and the frequency means number of matches played is 1, 9, 7, 5, 3. So Fx will be equal to 0 into 1 0, 9 into 1 9, 2 7 is 14, 3 5 is 15, 4 3 is 12. So in this way Fx will be equal to 50 and total frequency is 25. So with the help of this data given, we can find out the mean, that is 50 divided by 25, it is also 2. Means दोनों का frequency मीन जो है यहाँ पर भी 2 है, इधर भी 2 आ रहा है. Let us find the standard deviation for team A. First of all, we find out the xi minus x bar, that is 0 minus 2. Mean is given already, x bar is given 2, so 0 minus 2, that is minus 2, 1 minus 2, that is minus 1, 2 minus 2, that is 0, 3 minus 2 is equal to 1, 4 minus 2 is equal to 2. So take the square of the deviation from the mean, that will be equal to 4, 1, 0, 1, 4. So total deviation will be equal to 10. Fi into xi minus x bar का whole square will be equal to 1 into 4, that is 4, 9 into 1 is equal to 9, 7 into 0 is equal to 0, 5 into 1 is equal to 5, 3 into 4 is equal to 12. So in this way the summation of it will be equal to 30. So in order to find the standard deviation for team A, that will be equal to root of 1 by 25 into 30, and it will be equal to 1.2. So square root will be equal to 1.09. So coefficient of variance, that will be 1.09 divided by 2 into 100. It will be equal to 54.5. So the lesser coefficient of variance implies that the more consistent. So the team A is considered to be more consistent because its coefficient of variance is 54.5, whereas the coefficient of variance of team B is 62.5. So जिसका coefficient of variance कम होता है वो more consistent होता है. Hence team A is more consistent. Now come to the question number 5. The sum of the square corresponding to the length x in centimeter and the weight y in gram of 50 plant products are given below. देखिए summation of I is equal to 1 to 50, that is xi is equal to 212. अब ये क्या बताता है, number of frequency, total number of frequency is 50. Here again summation I is equal to 1 to 50 xi square
that is 902.8 एंड फॉर वेट के लिए है समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 to 50 वाई आई इज इक्वल टू 261 समेशन आई इक्वल टू 1 to 50 वाई आई स्क्वायर इज इक्वल टू 1457.6. Now, which is more varying, length or the length or weight? The question is, which is more varying, the length or weight? The length के लिए हमने एक कॉलम बना लिया, एक weight के लिए कॉलम बना लिया. लेंथ का देखिए मीन विल बी इक्वल टू 212 डिवाइडेड बाई 50, दैट इज 4.4. और वेट के लिए मीन जो निकालेंगे दैट विल बी 261 डिवाइडेड बाई 50, इट विल बी 5.22. नाउ सिग्मा स्क्वायर फॉर एक्स इज इक्वल टू 1/50 इंटू सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to 50 एक्स आई माइनस एक्स बार एक्स का पावर होल का पावर 2. सिमिलरली फॉर वेट के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस विल बी इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर दैट इज वाई फॉर वाई दैट विल बी इक्वल टू 1/50 समेशन आई इक्वल टू 1 to 50 वाई आई माइनस बार वाई का होल स्क्वायर. दिस इज द टू फार्मूला विच विल बी यूज्ड हियर in order to find the which is more variability of x and y. Now you see the length variance वाले वेरिएंस हम निकालेंगे. वेरिएंस इज इक्वल टू 1/50 समेशन आई इज इक्वल टू 1 to 50 एक्स आई माइनस 4.24 बार एक्स की वैल्यू रख दिया का होल स्क्वायर. Here also side by side we can proceed variance for weight, that is sigma square y, that is 1/50 summation I is equal to 1 to 50 y I minus 5.22 ब्रैकेट क्लोज होल स्क्वायर. अब देखिए यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर है. कांस्टेंट को हम बाहर ही रखेंगे 1/50 समेशन I इज इक्वल टू 1 to 50 एक्स आई. देखिए इसका स्क्वायर किया एक्स आई स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ 4.24 इंटू एक्स आई प्लस 4.24 का होल स्क्वायर. हियर ऑल्सो इसी 1/50 समेशन आई इज इक्वल टू 1 to 50. यहाँ पर देखिए वाई है, वाई का वाई आई स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5.22 इंटू वाई आई प्लस 5.22 का होल स्क्वायर. अब देखिए पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं. ब्रैकेट के अंदर का 1/50 समेशन आई इज इक्वल टू 1 to 50 एक्स आई स्क्वायर माइनस 8.48 इंटू एक्स आई. अब इसका मल्टीप्लाई कर दिया तो 8.48 आ गया प्लस 4.24 का स्क्वायर किया तो दैट विल बी इक्वल टू 17.97 ब्रैकेट क्लोज. Here also you see 1/50 summation I is equal to 1 to 50 in bracket yi square minus 10.44 into yi plus 27.25 5.22 का स्क्वायर कर दिया, ये आ गया 1/50 ब्रैकेट के अंदर रखा मैंने. अभी समेशन की जो साइन है अंदर डाल दिया हमने. सो समेशन या सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to 50 एक्स आई स्क्वायर माइनस 848 इंटू सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to 50 एक्स आई प्लस सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to 50 17.97. Similarly here also 1/50 outside of the bracket summation I is equal to 1 to 50 y I square minus 10.44 summation sign
I is equal to 1 to 50 yi plus summation of I is equal to 1 to 50 27.25. अब देखिए यहाँ पर ध्यान देने की बात है, ये हमें डाटा दिया हुआ है, ये डेटा दिया हुआ है 1/50 that is 902.8. It is already given. Now 8.48 as it is, summation of I equal to 1 to 50 xi that is also given, that is 212 plus 17.97. It is a constant, but it will be multiplied by how many times? It will be summed up. Summation है तो ये 50 times आ जाएगा. So in order to that you have to just multiply it. Here also you see 1/50 outside of the bracket. This value is given, that is summation of yi square, that is 1457.6 minus 10.44, and summation of yi is given, that is 261 plus 27.25 तो हो जाएगा ये. और अब इसको जब सॉल्व करेंगे समेशन के साइन से तो 50 विल बी मल्टीप्लाई बिकॉज आई वेरीज फ्रॉम 1 to 50. नाउ यू सी हियर 1/50 902.8 माइनस, तो ये प्लस साइन देखिए, ये जो प्लस वाला है मैंने शुरू में लिख दिया मल्टीप्लाई करके 7.97 इंटू 50 दैट विल बी इक्वल टू 898.5 माइनस 1797.76. इसका जो प्रोडक्ट आएगा माइनस वाला प्रोडक्ट, माइनस का इतना आ जाएगा. उसी तरह से राइट हैंड साइड में देखिए 1/50 1457.6 प्लस 1362.5 माइनस 2724.84 ब्रैकेट क्लोज. सो 1/50 एज इट इज, इसको प्लस किया 1801.3 माइनस 1797.76. Here 1/50 as it is 2820.1 minus 2724.84. फर्दर सॉल्व किया so 1/50 into 3.54 is equal to 0.078 डिवाइड करके. Here also 1/50 into 95.26 and after solving you will get 1.9052. Now the standard deviation for x, that is 0.266, and standard deviation for y is 1.38. So the variance, अब इसका हमने लिया तो स्क्वायर रूट लेकर के हमने ये वर्कआउट कर लिया, इधर भी इसका स्क्वायर रूट लिया तो 1.38 आ गया. क्योंकि ये वेरिएंस है, हमें चाहिए स्टैंडर्ड डेविएशन, तो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए इसका स्क्वायर रूट लिया 1.9052 का स्क्वायर रूट लिया तो 1.38 आया. उसी तरह से वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर है, इसका हमने स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए इसका स्क्वायर रूट ले लिया, किसका 0.0708 का स्क्वायर रूट लिया तो 0.266 आ जाएगा. तो कोफिशिएंट वेरिएंस for x will be equal to 0.266 into 100 divided by 4.24. It will be equal to 6.27. Coefficient of variance for y will be equal to 1.34. This is the standard deviation. So 1.38 into 100 divided by 5.22. It will be equal to 26.43. अब देखिए यहाँ पर इसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस है 6.27, इसका है 26.43. Here we get that the coefficient of variance length, variance weight is greater than the coefficient of variance of length. So variability of the weight is greater than the variability of the length. This will be the required answer of this exercise. This questions also, question number 5. That's all.